So why there is a lot of posting happening on social media? People sharing their pictures, people sharing their dance moves, people sharing their knowledge, people sharing their travel videos, people sharing their food, what they are eating, where they are going, which restaurants they are going, the places they are visiting. So why there is a need to post all of these content by people, and what is the real reason behind it? So, what are the needs or the basic needs of an inner child? An inner child needs to be seen, an inner child needs to be heard, an inner child needs to be loved, and an inner child needs to be appreciated. So, all of these four are the unmet needs of the childhood of every single person on this planet Earth, and that is why there is a lot of content posting happening all around the world. So, when we connect with our inner child in the most authentic and genuine way, all of these needs they vanish, and it makes you feel so confident and so independent, and you're so worthy from within that you need not depend on any external things for loving you, for appreciating you, for seeing you, for hearing you. You are enough in yourself. In this video, I'm going to share with you 5 techniques to connect with your inner child, which can bring you joy and pleasure in your life. So let's get started. In this video, we are going to experience the joy of connecting with our true self, that is our inner child. सी इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सी सॉलिड रीज़न बताने वाली हूँ. जो इनर चाइल्ड है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है. आर इनर चाइल्ड नीड्स टू बी सीन, इट नीड्स टू बी हर्ड, इट्स नीड्स टू बी एक्सेप्टेड एंड इट्स नीड्स टू बी वैलिडेटेड. तो आप सोशल मीडिया पे आजकल जितना भी ये सब कंटेंट देख रहे हैं, पीपल आर शोइंग देयर टैलेंट्स, पीपल आर शोइंग देयर अचीवमेंट्स, पीपल आर शोइंग हाउ देयर लाइफ इज, वो कहाँ ट्रैवल करते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं. सो पीपल आर डांसिंग, पीपल आर स्पीकिंग, पीपल आर showing how beautiful their life is. People are traveling, people are sharing their pictures, people are sharing their videos. तो ये जितना सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे जो हर रोज़ लोग पोस्ट करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है. उनका जो इनर चाइल्ड होता है, वी ऑल हैव एन इनर चाइल्ड, और हमारे इनर चाइल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स आउट इन द वर्ल्ड. So, the very basic need of an inner child is to be seen, to be heard, to be accepted, to be loved, to be appreciated, to be validated. तो ये सारी जो क्रेविंग्स होती है ना हमारी इनर चाइल्ड की, उन्हीं की वजह से there is a lot of content available on Instagram, on Facebook, on all the social media platforms, because we all need to be seen, heard, and validated. So, without depending on external validation, if we connect with ourselves and we connect with our own inner child at a very deep level, हमारी ये सारी जो requirements है ना, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहती है फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स, ये हम पूरी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर वी कैन हील आर इनर चाइल्ड. बिकॉज अल्टीमेटली ये जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो कहाँ से आ रही है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर ओन इनर चाइल्ड. So there are the authentic and genuine techniques to connect with your inner child. And in this video, I'm going to share 5 techniques with the help of which you can connect with your inner child in a very deeper way. And it will bring you such a joy and immense pleasure in your life that you will feel like you are no longer slave to present yourself out in the world for acceptance, validation, and appreciation. यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर इनफ फॉर योर ओन. जब हम अपने इनर चाइल्ड से ऑथेंटिक वे में कनेक्ट करते हैं, देन वी रिमूव ऑल आर डिपेंडेंसीज फ्रॉम द अदर पीपल. हम दूसरे लोगों पर से अपना डिपेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं, एंड वी कैन फील आर सेल्फ टू बी इनफ. सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट टेक्निक. So the first technique is to find one activity which you used to love as a child. So एक ऐसी एक्टिविटी आपको सर्च करनी है जो आप 7 years से लेकर के 14 years तक में करते थे. What were your hobbies
दैट दैट टाइम आप जब 7 साल के थे तब से लेकर के 14 साल तक का जो टाइम होता है, जब अपनी हॉबीज़ फॉर्म हो रही होती है, जब आप ग्रो हो रहे होते हैं, तब ऐसी कोई तो एक्टिविटी हम सभी की होती है जिसमें हम पूरा फ्लो स्टेट में चले जाते थे। वी यूज टू फॉरगेट द वर्ल्ड, हम अपने आसपास की दुनिया को, हमारा जो टाइम फ्रेम है, हम हर चीज़ को भूल के उस एक्टिविटी को एंजॉय करते थे। तो ऐसा वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसको आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे? It may be dancing, it may be drawing, painting, crafting, it can be sport, it can be playing indoor games also. So ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो आप इतना इंडल्ज होके करते थे कि आप सब कुछ भूल जाते थे? The first technique is to set up a play date for yourself. You can fix a date and a time in a month for this kind of play date, and you can do your favorite activity you used to do as a child. You can draw, you can paint, you can do some craft activity, you can dance, you can play a sport, you can do anything you want in that time. It will help you connect with your inner child at a deeper level. You can also form new hobbies if you want, because every time we spend time with ourselves, we eventually get connected to our inner child at a very genuine and a deeper level. The second technique is write a letter to your inner child. राइटिंग एक ऐसा टूल होता है जो आपको आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है. सो whenever you write anything with your hand, on paper with pen, it connects your subconscious mind with your thoughts and emotions, and that is why writing letters to your inner child is also one of the various activities which can help you engage with yourself at a very deeper level. It will help you connect with your inner child. So whenever we are writing a letter to our inner child, what we need to recall is हमारी इनर चाइल्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, एंड वी आर राइटिंग दोज थिंग्स इन आर journal which are fulfilling the needs of our childhood. The need to be loved, seen, appreciated. You can express your love, validation, and encouragement. Inner child से connect करने के लिए it's really important that you connect with the emotions first. Share the words of comfort and support that your inner child may have been wanting to hear from you or from your parents or from the caretakers. This can help to foster a nurturing and compassionate connect with a younger version of yourself. और वहाँ पे कुछ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. So every time you feel like you're not good enough, every time you feel like you are struggling with some decision making, आपको अपनी adulthood में भी अगर कुछ decision लेना होता है, so go back to your past, write a letter to yourself, write a letter to your inner child that why he or she is feeling not being good enough. And from there, when you start writing, you will feel some emotions coming out, and then if you can work on those emotions, you will be able to connect with your inner child at a very deeper level. Technique number 3. The third technique is to create a collage of your childhood pictures. तो आप अपने बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हैं अपने चाइल्डहुड के और उनको आप एक अच्छा सा कोलाज बना सकते हैं. यू कैन यूज़ द scissors, you can use the glue, you can use various things to decorate the ribbons, the tapes, the stickers, और आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके कोलाज बनाएंगे. जब आप उस कोलाज को देखेंगे तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज आपके सामने आएगी और आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे. तो समटाइम्स द digital collages or the things we make on software, it doesn't connect with us. कुछ चीज़ों को आपको ग्लू से फील करना होता है और फेविकॉल हमारे फिंगर्स पे लग जाता है और जो हम उस ग्लेयर को निकालते हैं. So the smell of the Fevicol, the touch of the scissors, the touch of the photos, the shine and the slippery side of the photos, ये सब जो हमारे सेंसेस को, हमारे पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं. वी सी, वी हियर, वी एक्सपीरियंस, वी टच. हमारे जो 5 सेंसेस है उनको एक्टिवेट करने का ये जो एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते हैं. इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक वे ऑफ बीइंग विद योरसेल्फ. सो दिस टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड बाय making a collage of your childhood memories, it will bring you immense joy and pleasure in your life. So technique number 4 is creative expression. So expression is a very different kind of thing for different kind of people. Some people try to express it
verbally, some people like to express it in written form. So creative expression is the fourth technique to connect with your inner child. So in order to connect with your inner child, you need to identify what is your way of expression. So आपका expression का तरीका क्या है, ये आपको identify करना बहुत ज़रूरी होता है, because whenever we are trying to connect with our authentic self, what are the ways through which we used to express as a child. तो अभी बड़े होने के बाद में तो हमारे पास words and wisdom होता है, we can communicate anything and everything, but as a child, what were your ways of communicating things to the world, to your parents, to your caretakers, to your family, to your friends? आपका तरीका क्या था किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का? So in the world there are three kinds of people. The people either are visual, people are auditory, and either they are kinesthetic. तो विजुअल जो लोग होते हैं दे लाइक टू सी थिंग्स, तो उनको विजुअल जो इफेक्ट होता है चीज़ों का वो पसंद आता है. ऑडिटरी पीपल होते हैं जिनको सुनना पसंद होता है. काइनेस्थेटिक पीपल को फील करना पसंद होता है. तो आपका कौन सा तरीका है जिससे आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, जिससे आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो पाएंगे? दैट इज़ योर responsibility to find that what is your way of connecting with yourself. Do you like to see things? Do you like to listen to things? Do you like to feel things and you like to share your feelings? आप देखना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आप बचपन में कोई पर्टिकुलर कार्टून देखते थे तो वो आपको देखना पसंद था. क्या आपको म्यूज़िक सुनना पसंद था, तो यू आर एन ऑडिटरी पर्सन, जो आपको सुनना पसंद था. जब आपको सुनना पसंद होता था तो आप क्या सुनना पसंद करते थे? ट्राई टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ म्यूजिक विच यू यूज्ड टू लिसन इन योर चाइल्डहुड, and what you used to feel about the things, about the people, about your own self, जो आपकी feelings को बाहर लेकर आए, ऐसे emotions and thoughts को बाहर लेकर आए, which you frequently used to feel about yourself. So when we want to connect with our own self at that authentic level, we need to identify these three things from our childhood. So what you used to see, what you used to listen, and what you used to feel. ये जो तीन चीज़ें हैं, अगर आपने ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड एट एनी टाइम you want. And connecting with your inner child will not only give you solutions to your problems of your current life, but it will always bring you a lot of joy and pleasure in your life. One of the beautiful ways to connect with your inner child is to add a guided meditation in your meditation practice. So कुछ guided meditations मैं upload करने वाली हूँ channel पे, so that it will be easier for anyone to access your inner child at any time you want to. So whenever we are in a state of calmness and peace, it's easier for us to connect with our inner child at a deeper level. तो जब भी आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ गाइडेड मेडिटेशन. इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू if you add inner child guided meditation in your spiritual practices. So in this video we have discussed why connecting with inner child healing is important, because we all have a lot of unmet needs from our childhood. जैसे कि we all need to be seen, we all need to be heard, we all need to be loved and appreciated. तो वो जो appreciation है, जो हम सोशल मीडिया से फोटोज़ पोस्ट करके हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो बाहर जाके ट्रैवल करके आते हैं, बाहर खाना खाने जाना है, बाहर की दुनिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी को कम करके हमारे खुद के थॉट्स और फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सेस कर पाना कि हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए. बिकॉज द नीड्स ऑफ आवर अडल्टहुड आर नॉट द नीड्स ऑफ आवर करंट लाइफ, दे आर द नीड्स ऑफ आवर अनमेट expectations from the childhood. So these were the 5 techniques to connect with your inner child. And so when you connect with your inner child in the most authentic way, you remove your dependencies from the people, from the events, from the situations of your life, and you become the most fulfilled version of yourself. So practice these 5 techniques and tell me which one is your favorite among all the 5 techniques, and I'll see you in the next video.